अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, इकॉनमी की भी बात करेंगे, बिजनेस की भी बात करेंगे, लेकिन उस इंसिडेंट की बात करते हैं जो आज के दिन हमने देखा कि शोक मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क भर में परचम भी सरनगू किए गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो पाकिस्तानी वो रोज़गार के लिए, हम कह सकते हैं कि अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के निकल जाते हैं और ग्रीस में ये हादसा पेश आता है, जिसकी वजह से बड़ा दुख का मंजर देखा गया है। साथ साथ उनके लवाहिकीन जो जीते जी मर रहे हैं, जिनके लिए एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है। इस सानहे के बाद हमें इसे रोकना भी होगा। इंसानी स्मगलिंग को भी, इस इलीगल तरीके से जो जाते हैं, जिनको पता नहीं होता, भोले भाले लोग मजलूम बन जाते हैं और उन मासूम लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। इस फ़ायदा उठाने के बाद उनके घर वालों को रोज़ जो मरना पड़ता है, इस चीज़ पर आज हम इसको कंडेम भी करेंगे। इस पर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अब ऐसा सानहा दोबारा ना पेश आए। हम दुआ गो भी रहेंगे। सो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे के बाद आज हम बात करेंगे तमाम जो है वो ट्रेजिक इंसिडेंट जो हुआ, साथ साथ वो लोग जो इसमें मारे गए, उनका क्या कसूर था, आज हम डिस्कस करेंगे। जर्नल इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से बात करेंगे। इकोनॉमी के क्या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बिजनेसेस कैसे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन कैसे हैं। बायलैटरल रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन के अंदर भी और हम कहेंगे पूरी दुनिया के लिए भी। सो वी विल डिस्कस टुडे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं एंड्रीस वेगनर, काउंसिल एंड डिप्टी हेड ऑफ मिशन कंपनी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। वेल, और हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद बाबर खान साहब। आप सेंट्रल चेयरमैन हैं पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। So first of all, we will discuss the incident today. Idris is here. Idris, what do you think? This kind of incident is very condemnable. Do you think that today we are, this is the mourning day, in fact in the nation, what kind of comment you will do? First of all, my condolences and sympathies are going out to the families of the deceased, and it is a tragedy which should move the focus on migration and of refuge into the focus of the world's eye. Migration is something which we have seen over thousands of years, but today we can migrate faster. We can take cars, trucks. I mean, remember those pictures of people packed in container trucks. Heart-wrenching. Terrible. So migration is going faster, and we are having, as of today, 270 million people migrating, which are on the run. That is a number we should never forget. Migration happens for a lot of reasons. Can be ecological, lack of water, women's rights. The very important, I mean, we see that in some countries where women's rights are actually totally neglected. This is a reason for migration. Political threats, social threats, Right. as well as economic conditions. So we are not only having refuge for political reasons, but as well people are trying to take refuge from economic situations. So again, my sympathies are going out to the victims, and I am sure that the culprits will be caught. इंशाल्लाह, गॉड विल। बाबर साहब, आप बताएं, इंट्रोडक्टरी कमेंट दें। एक तो यूनान में जो ये हादसा पेश आया और दूसरी बात ये कि इसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी शामिल थे। क्या समझते हैं आप? It's a very tragic accident, and actually it should be stopped, and only we can stop this. We can stop our illegal immigration from our country, and the reason of the immigration from Pakistan is economy. Basically, is the
poor people are going out of Pakistan, migrating illegally because of the economy. They are like risking their life. And You can give the answer in Urdu because Andres doesn't speaking Urdu. This is the reason. This is the Urdu program. ओके तो ये जो हमारे इकोनॉमिक जो हालात हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवान ज़्यादातर नौजवान ही हैं वो बेचारे मायूस होकर एक अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में जाते हैं और फिर वो बेचारे अपनी जान से चले जाते हैं क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन होती है, उसमें रिस्क होते हैं, ख़तरे होते हैं। असल चीज़ तो ये है कि बहुत अरसे से हो रही है। एक हादसा हो जाता है, हम कुछ दिन के लिए मॉर्निंग और कहते हैं गम मनाते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर ये दोबारा शुरू हो जाता है। आज तो असल बड़ी तो गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़ी थोड़ी बहुत होती हैं और फिर क्योंकि जो सिस्टम हमारा जो जुडिशल सिस्टम और जो सिस्टम है उसकी वजह से वो लोग बेचारे फिर छूट जाते हैं। बेचारे क्या, वो क्रिमिनल सारे छूट जाते हैं और इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये रोकना चाहिए, इससे मुल्क बदनाम हो रहा है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और हमारे नौजवानों को एक मुस्तकबिल फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए कि उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा। मैंने कुछ ऐसे फैमिलीज भी देखी हैं जो कि काफ़ी सही घर के भी हैं, फिर भी वो गए। तो ये क्या रीज़न होगा बाबर साहब? देखिए, वो रीज़न भी यह है कि सही घर के तो होंगे मगर आगे उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये एक है ना कि लोग पढ़ लिख जाते हैं, फैमिली पढ़ा देती है मगर जॉब एम्प्लॉयमेंट है नहीं। जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं क्रिएट होगी। तो फिर वो लोग देखते हैं कि भाई वहाँ पर तो टैक्सी ड्राइवर भी इतने पैसे कमा लेता है, फला मजदूर भी इतने पैसे कमा लेता है, तो वो हम जो है कहते हैं फिर कन्वर्जन रेट जो हमारी रुपए की वैल्यू हो गई है Rupee valuation is the main problem. उसकी वजह से भी लोग कहते हैं चलो वहाँ इतने पैसे कमाएंगे, यहाँ तो इतने पैसे बन जाएंगे। तो इसलिए ये एक रीज़न है। Andres, you can add on it if you want to. I would like to mention a flip side of the coin. People are not only migrating from, they are migrating to. So the receiving countries are facing difficulties as well. It's a multi-level issue that we're having here. And Should we address? when I see the migration towards Pakistan, and this is as well giving quite some challenges to the local politics, state politics, and federal politics. Now, we support the management of crisis, of problems. I'm just coming from an opening of a hub for migration and refuge management. We all know that any problem you're facing, any crisis you're facing, it needs to be managed. And there are tools, we have tools in the box, and I think we will continue doing that. And whatever we have learned from crisis, we are happily conveying, and we are listening as well to learn as well. So it's a dual kind, but that's the flip side of it. We will discuss it and we will address it inshallah in the future, because human smuggling is condemnable. We need to discuss some topics like bilateral relation. What do you think about bilateral relation of Pakistan and Germany? How is it? They are historically going back into history, and the relations to Pakistan and to Germany from either side had been trustful, confident, and they are long established. Some world developments over the last 20, 30 years have certainly led to misunderstandings here and there, but on our side it is always an open door, and I cannot speak for the Pakistani side. Okay, बाबर साहब बताएंगे। ये बाबर साहब, पाकिस्तान एंड जर्मनी या डिफरेंट, अगर हम एक्सपोर्ट्स एवेन्यूज देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं? Germany has the third largest economy of the world, right? And they have they are the fourth or third largest economy, and they are importing as well exporting. So they are importing from all over the world. They are the largest importer, third largest importer, and third largest exporter almost. So we have a lot of chances to learn from Germany
and we can learn. They can train us. They can give us a lot. And Germany has been giving training to Pakistan for several years. We are the people. We are not getting enough benefit from this trainings and this country. We have to have better bilateral ties, and we have to send our youth for training, and not illegally, legally for training, for education, for बाबर साहब ये even तो for बड़ी work. अजीब सी बात हो can go. जाएगी लीगली ऑब्वियसली यस लीगली ही बात होती है इलीगल तो होती भी नहीं है मगर जो आजकल हो रहा है वो ज़्यादा इलीगली से ज़्यादा इलीगली हो रहा है हालांकि वी हैव अ चांस बहुत ब्राइट चांस क्यों है हमारी यूथ का जो एक फोकस है वे ऑफ थिंकिंग है वो शॉर्टकट्स की तरफ है वजह अगर यह है कि यही आपने इसी चीज को पॉइंट आउट वजह यह किया है कि उनको जिस तरह से रास्ता मिलेगा वो करेंगे वी हैव टू गिव देम अ वे कि दिस इज द राइट वे हमारे पास लैंग्वेज वी नीड मोर लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट इन कराची इन पाकिस्तान to learn German language, so people can learn and they can get further education in Germany. They can go for further education. They can go legally for jobs, for work permits, work visa. If they are eligible, we have to make our youth disciplined, literate. So we will discuss about the project of cooperation. What kind of cooperation Germany and Pakistan are doing? Let me just respond to what you just said. Yeah, We still please. have open seats at the Goethe Institute Karachi for language courses. So we are willing to expand whenever necessary. We are right now So there will be creating no language creating barrier. the preconditions, and we have shifted. I mean, we both know the old language courses where you're sitting actually in a class and keep studying. Today, language courses are of course online. So we have a far wider capacity, and that is very important to understand. Our capacity had yet not been met. Now, we are having this year 560 students, which are On a which scholarship? are sorry On a scholarship? on scholarship, Okay. and that is, I think, very encouraging. I understand that language is an issue. I mean, if I had to study here, I had to learn Urdu, and that will take me at least a year to get at least to a Some point where I understanding, can right, I can handle that. Me personally, I wouldn't like to learn German again. So thanks God Why? I know it. The So reason? it is, but there are relations to English-speaking countries which are much closer. I understand that, but nevertheless, we offer it all. So, can you please tell us, Indris, about the project cooperation? Like you have told us off the record that some inaugural projects are starting. You have inaugurated some projects like Balochistan Hub project and No, something. it was a Karachi hub. Karachi Hub, okay. Karachi hub. We have other projects. We have as well emergency projects. We were the first one supplying food to flood victims last year. Wow. We have managed to secure funds for an ad hoc help, and within days we were able to supply the food. We were working with long established contacts, and we can say 100% had reached the people. लाइक बाबर साहब यहाँ पर इंड्रीज का यही कहना है कि कॉपरेशन जारी है आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए एफडीआई के ऑप्शंस तो बड़े मौजूद हैं लेकिन कौन से ऑप्शंस हैं जो पाकिस्तान के लिए अभी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं एज यू नो द इश्यूज ऑफ इकोनॉमी एंड एज यू नो द इश्यूज ऑफ right now Pakistan is a very cheap country in terms of labor and everything due to the conversion rate, but we have to provide the infrastructure. If we want to attract German industrialists, German businessmen, we have to provide the infrastructure. We have to provide like security. People are not coming because they don't feel safe. They don't see the infrastructure. So agar hum talk about law and order situation, law we and are order situation safe now. It's safe, but it doesn't look safe, and it's not very easy for people to commute on the roads even. So like we have to give them the infrastructure
and then attract them. They definitely come. We have a 60%. What kind of attraction you are talking about? Is the market genre or something? Like we have, we should have some better industrial states where they can come and they can feel that it's a good industrial state and we can work there. We can provide security of their investment. They can provide the good living conditions, so they can come, they can invest, or even if we can cooperate with them, We will attract for good returns as well. Yeah, the good returns is more important, and we can provide good returns because we have cheap labor, we have cheap land, but we have to provide them. We have to provide electricity, gas, all infrastructure what they require. Power, right. You I would please like add. to widen the definition of security. I mean, we are not only talking about security in a traditional way. Security as well for supply of gas, supply of electricity, security Of rights. in terms of banking system, very important. The financing system has to be right. If you look at, for instance, the Karachi export encouraging support center, they are providing all that. But why do they exist? Because outside it does not. So there has to be an attractive field for investment. As well, there has to be a reliable legal workflow. We have investments which couldn't open yet. What kind of investment That you are was thinking to invest in production Pakistan? lines. We are still waiting for the permission to import production lines. The factory is ready to go. We would like to have that enhanced. But let me give you another example of how we support the Pakistani economy. You know, if you're looking at the export rate of Pakistan to Germany, that sums up to 2.7 billion US dollars. And in the same moment, the export from Germany to Pakistan is down for good reasons at 1.2 billion. So Pakistan is actually earning. These are the latest figures? Those this are year figures? those are the latest figures. Okay. So Pakistan is actually earning on our bilateral trade, which we are very happy, you know, because Pakistan is struggling. Pakistan is struggling at the foreign account, a lot of aspects. foreign account budget, and if we can help to support that struggle, we happily do that. It's more than welcome. बाबर साहब प्लीज़ इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए कि एक तो हमारे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा ये कि टेक्सटाइल कैसा दिखाई देता है जर्मनी के लिए. ठीक है, जर्मनी इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर टेक्सटाइल इन यूरोप. सो जो कहते हैं बहुत अच्छा स्कोप है, मगर ये कि जाहिर है कि एक न्यू कंप्लाइंट रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करना है पाकिस्तान इंडस्ट्री को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको फॉलो करें और जो है हमारी इंडस्ट्री जो है उसको फॉलो करे. और ये कि आफ्टर जीएसपी की वजह से हमें बड़ा एडवांटेज मिला है, जो हमें जीएसपी प्लस मिला हुआ है, हमें ड्यूटी का एडवांटेज, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो इंक्रीज हुई है. तो ये हम यानी इसमें और बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं. इसमें जो है हम अगर मेहनत करें तो मज़ीद ग्रोथ हो सकती है. ग्रोथ हो सकती है. आईटी के अंदर बड़े चांसेस हैं. मैं एंड्रिस से भी पूछूंगी, लेकिन आप पहले कमेंट कीजिए. जिस तरीके की ये ह्यूमन स्मगलिंग करने की कोशिश की गई या फिर ये हादसा पेश आया, ऐसे हादसे भी ना हो और ऐसे यूथ के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हों जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बेहतरी आ सके. देखें, ये तो हमारी यानी कि टोटल यानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट हों कि हमारे अच्छे यूथ, एजुकेटेड यूथ होंगे तो देयर अ डिमांड ऑफ एजुकेटेड पीपल. ठीक है, तो अगर हम अच्छे यूथ जनरेट करेंगे, अच्छी एजुकेशन, अच्छी मैन पावर जनरेट करेंगे, तो जो है ये एक बहुत अच्छा जो है कहते हैं अपॉर्चुनिटी हो सकती है. और जर्मनी क्या पूरे यूरोप में अपॉर्चुनिटी है. मगर ये कि ये आपको देखना चाहिए. दूसरी बात ये कि आईटी एक ऐसी फील्ड है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए इमिग्रेशन करें, आप कहीं बैठ के भी दुनिया में काम कर सकते हैं. आप पाकिस्तान में एक ऐसा आईटी हब बनाए कि आपके लोग काम करें तो कर सकते हैं. हमारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ 60% यूथ है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यूथ की कि आप इसको इतना बड़ा यानी कि एक इंजन है, इसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, इसको ज़ाया कर रहे हैं.
उसको वेस्ट कर रहे हैं, वो बेचारे इलीगल इमिग्रेशन कर रहे हैं, इलीगल जो है जा रहे हैं, तो आप उसको रोकें और लोगों को गाइड करें। आपका एजुकेशन में बजट जो है 2.7% तो आपका जो है मेरा ख्याल है एजुकेशन का बजट रखते हैं आप, तो एजुकेशन में कोई तवज्जो नहीं है उसमें भी। आप सही बोल रहे हैं, बट वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। आप सही बोल रहे हैं कि सेक्टर वाइज हमारी जो एक सप्लाई है वो तरीके की होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हम कोई सही से इंसाफ नहीं कर सके इन तमाम चीज़ों पर। जी हाँ बिल्कुल। Right. Andrews, do comment on that. We have huge freelancers. We are, blessed with the youth capital, human capital. We have 60% of youth in all population. What do you think about IT sectors opportunities? Germany is working on IT sectors, and a lot of Pakistanis have already there and doing work on fintech basis. What do you think about IT sector of Pakistan? Before I'm getting to the answer, may I just refer? Yeah, And I please. will come back to that. Then. I just a week ago participated in the opening of a German pump service factory here, and I'd asked them, what are your main obstacles? And they said that the training of youngsters is a major obstacle, because there is no formatted vocational training. We're not talking about high education. We're not Yes. talking about universities. IT, We are talking about Labor. vocational training. So is there a Electrician, lack of trainers or just lack electri- of vocational training centers? See, there is no formal acknowledgement of vocational training. There are no formal electricians. There are no formal plumbers. There are no Certified. formal certified blacksmiths. That requires a lot of investment beforehand, before you are even thinking of opening anything. So those companies which are investing here in Pakistan, and especially in Karachi, need to invest into the vocational training first. And they had to filter, but that is a worldwide phenomenon, they had to filter out the knowledgeable people. Now coming to your question, the IT sector. Yeah. I'd been If to... you call the people to your country, you need a certified proper labor. You're talking about that? No, well, we can't, we don't do that. We are training internally, but we wish if there were formal vocational training available. And I think it is for the benefit of possible investors from worldwide, and it will be for the benefit of Pakistan, of course, because certified handcraft will, at the end of the day, make the consumer happy. But Right. coming to the IT sector, IT sector, yeah. I was at the IT fair last October, September, and I was astonished how many Pakistani companies are actually working for German companies or are cooperating with German companies. They're usually working as subcontractors. They're developing programs for machine programs, industrial programs, parts of it. And that was a moment when I understood this is a huge field of cooperation. And I think Pakistan is having tremendous perspective in the IT sector, because you have a very vivid youth which is very interested in advancing. And have a lot of potential. And with huge potentials, I agree. Yeah. So बाबर साहब, आप इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि टेक्सटाइल की मैं अगेन पूछना चाहूँगी कि बजट के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। बजट के अंदर थोड़ा सा एक लीनियंट रखा गया है उस गरीब तबके के लिए, उन लोगों को रखा गया है टारगेट जो कि बहुत ज़्यादा बिलो दी लाइन हम कह सकते हैं, जिनकी बड़ी मुश्किल हालात थे। क्या समझते हैं आप टेक्सटाइल के हवाले से? टेक्सटाइल के हवाले से ऑल्दो इंडस्ट्रियलिस्ट्स आर नॉट हैप्पी। देखिए, असल तो ये कि ये तो डे टू डे एक फ़ाइट है पूरी, के जो है कि किस तरह बजट का इश्यूज़ भी रहते हैं, पॉलिसीज़ के इश्यूज़ भी हैं, मगर इसी के अंदर सर्वाइव करना है। अच्छा, एक तो इशू ये है कि
टेक्सटाइल्स जो है ना इस पर पाकिस्तान की बैकबोन है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है. अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग से आई जस्ट वांट टू ऐड सम फ्यू थिंग्स. वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वी फील द इंडस्ट्री, what labor force we are getting, they are not trained, they are not disciplined, because there is no institute training illiterate laborers. Which labor you are talking literate about? in any field of industry. When the labor come, even what he said that we don't have certified plumbers, we don't have certified electricians, trained certified electricians. Because the industries are not paying them well, na? No, it's this not. Is also it's not the like reason. that, because the training institutes, there's lot of training institute developed by the government, but Vocational centers are unfortunately here. in Pakistan, what the institute government is running is not running well. That's the major issue. हमें इस पे तवज्जो देनी चाहिए. We have lot of institute training का material, trainers, training quality, और उसकी एक सर्टिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री के लिए और फॉरेन एफडीआई के लिए. बात है, जब आप ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए करने की भी, अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, इंडस्ट्री लानी है, तो जब वो आएंगे तो देखेंगे उनके पास लेबर कैसी मिल रही है. लेबर they will set their vocational center नहीं ना? तो मगर उसके what we were talking कुछ तो बेसिक लेबर जो कहते हैं ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना. बेसिक डिसिप्लिन जो है कंट्री में होना चाहिए, जिसके बाद लोगों को ये फायदा होता है कि जब वो आते हैं तो उनको कहते हैं कि यार लेबर अच्छी मिल गई, अब हमें अपने एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी है, वो हम दे के इनको जो है कहते हैं अच्छा और मजीद ट्रेन कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेक्टर है, जिस पे हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे इनसे कि हम किस तरह से इसको जो इंस्टीट्यूट हैं उनको कैसे और बेहतर कर सकते हैं. दूसरी चीज़ कि टेक्सटाइल जो है इस पर गवर्नमेंट को और मजीद तवज्जो देनी चाहिए. इस वक्त टेक्सटाइल ही ओनली जो है डॉलर अर्नर जो फॉरेन एक्सचेंज टेक्सटाइल, ठीक है. तो इस पर देखना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर से बैठना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो और इंडस्ट्री के फ़ायदेमंद हो. You want to add something? There are reasons for the absence of certified training. Ex-industry. We are talking about ex-industry. Industry is another issue. Customers need to understand the value of the work they buy. Yes. If they don't have the technical understanding, they cannot appreciate. Now, if I put myself into the position of a youngster, saying I would actually like to become an electrician, but I know that that my customer rather spends millions into marble and starts negotiating my hourly salary. What is the point? What's the point? So investing into a vocational training is a top-down state Priorities, issue, objective. It cannot be left to the private market, because that is far too expensive for someone who wants to study. When there is a new technology, what do you think about this when someone is investing there and taking a new technology with them? Do you think the vocational center work with it? What kind of expectation you are expecting from this company or this significant proper mill? What new technologies? If there is a new technology, don't you think that this is you mean introduction of new his or her technology? duty to supply, to start any new technique or new training to the labor? I think we are seeing something like this right now in Pakistan, with the government strongly supporting renewable energy, especially in the photovoltaic area. That requires, it does not require the one who just had a screwdriver in his hand, but it requires specialists, and it does not, it requires engineers, but it requires as well craftsmen. And so you judge for yourself. How is the situation in that field? What is behind that government support of renewable energy? Is there the support for vocational training? Is there the support for filtering the
those in the youth who are capable of doing that. So there is a whole tail of questions which I cannot answer. I mean, I just don't have the information. Yeah. But you are thinking that this is the responsibility of the government to provide a proper vocational centers for the Yes. citizens to continue the labor working in Pakistan with the FDI, with the bilateral countries who are investing in Pakistan? Well, first of all, vocational training is a duty of every state Yeah, nationally. that's right. It is in the interest of the country, and of course there are fields like, for instance, that pump company, which assessed the situation. We will invest into vocational training. We are not only good in terms of transferring knowledge, but as well it is paying off. So in that whole process, there has to be a profitability. This is actually the issue of investments, you know, when some people or some country start investing in Pakistan or the other country. This is the main issues you are thinking? No, it's not the main issue. What are the main issues of investment in At the end Pakistan? of the day, it's a matter of calculation. Before I'm deciding to invest in a country, I need to get through a whole list of what do I need to invest. And the second part is what I said, reliability of legal workflows. I have to be able to follow, if my project is permitted and legalized and licensed, I have to be able to follow it down through the end. Right now, for instance, the company Volkswagen is stuck right in the middle. Factory is ready. बड़ा इशू हो जाता है बाबर साहब मैं इसी पे ही आपका भी कमेंट चाहूँगी. बड़े इश्यूज हो जाते हैं समटाइम्स. आपको किसी चीज़ की एनओसी नहीं मिलती. व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कंपनी, आपको यहाँ पर 18-19 एनओसीज लेने पड़ती हैं. आई डोंट नो कितनी लेनी पड़ती है, लेकिन इतनी मेरी इल्म में यही है. आप समझते हैं? एक लफ्ज़ सुना, बैड गवर्नेंस. बैड गवर्नेंस जो होती है किसी भी सिस्टम में, वो उसको चलने नहीं देती या उस तरह चलने नहीं देती जिस तरह की रिक्वायरमेंट है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बात मैं ऐड करूँगा, सस्टेनेबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, जर्मनी इज फार अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी, एंड इन नेक्स्ट 10 years 83% of Germany with on the renewable energy, right? In the next 10 years. Hopefully. So hopefully they are trying for that. 86%. 83%. 83%. Okay. Acha, with water, like air, wind energy, wind and solar. So so biomass, like four type of energy they are using, renewable energy, to produce electricity. Solar, wind, and there is a hydro, biomass. Hydrogen, very important. We are talking about today. We are talking about hydrogen for cars. This is not profitable, but it is profitable for industries, especially energy-consuming industry, Hydrogen, you are steel, talking about aluminum, chemical industry. So, of course, hydrogen can be produced in many ways, but there's only one sustainable way, and that is green hydrogen, which has been produced through renewables. And we have, as Germany signed a couple of years back, strategic agreements with the Gulf states, especially with the UAE, where we say we are potential customers. We can guarantee you to take an X amount of hydrogen from green production, and you have to be sure that you'll be able to do that. And those agreements had been signed. They are all on their way. We have the company Siemens had done pilot projects in Dubai, and because fossil fuels will be at the end, and latestly, hopefully, 20 years. And what happens to the countries at the Gulf? You know, when they are losing the export market for fossil fuels, and they do not replace it by other means, they will lose influence. That's the last thing they want to do. Obviously. So they have invested into the production of green. They have already plans. Green they hydrogen. have already designed the visions. So may I add one thing? With the sustainable energy, Pakistan requires this sustainable energy technology,
and we can learn from Germany. We can learn a lot in this field with Germany. Government has to think about it. Government has already reduced the duty on solar. Okay, duty, You but can we have please to comment on we that. have to provide the infrastructure so that the German manufacturer can come here and train our nation and supply this solar energy or wind energy equipments. So it's not difficult. It's very easy, and Pakistan has a requirement, big requirement. I So- think Pakistan is having the capability of producing these that equipment, and that's the point. Pakistan is having several phases, and one phase is very clear: it's a high-tech country, very important, never to forget. And I think Very that resilient nation. sorry. Very resilient nation. Yes, yeah, exactly. And it just requires projects where that is coming out what's been putting in. Right. Can you talk about some events like Olympics? Yes. Have you planned anything about Pakistan and Germany? Is there anything in the pipeline? Well, I think Pakistan plays cricket and we are playing soccer. Yeah. No, but there are the Special Olympics happening right now in Berlin. In Berlin, yeah. Team has gone there. I was very proud seeing yesterday that the Olympic flame had been carried by Miss Sana from Pakistan. So, Yeah. what better opening can we have? Wow. This is the, a trademark, a properly Great achievement. catchphrase. Yeah. Yeah. So, can you comment on the businesses about Pakistan and Germany for the future? Because we are we have a good relationship in bilateral ways, in the barter system. Have you planned anything? Because a lot of countries are trading in their own currencies. Like we have bought oil from Russia in the Chinese yuan. So, you have any planning? And gas from Kazakhstan. Yeah. So, have you any plans about the currencies exchange or something about barter system? You have planned anything? No. Everyone is looking right now what is happening to the Volkswagen factory. So this is, it can be an encouragement, but it can be a full break as well. So where things got stuck again. I mean, we have to see, major investments are difficult. Now, talking about trade, this is what you do. I mean, I think we got out of the roughest waters in March, where we were not able to export high-value goods into Pakistan because central bank could not issue LCs for obvious budget reasons. I hope that this time is over. And I think the conditions have to be clear. The financial conditions have to be clear first. The budget conditions have to be clear. And they are not yet clear. We are still waiting for the... This is the bad luck for Pakistan. You heard about the climate condition last year. It was worst. A lot of countries have recognized this. United Nations have recognized this. This is the worst condition, climate affection for Pakistan. But where could we help at that point? I mean, I'm not sharing necessarily all the demands which are on the public market, but there are certain reforms which I think need to be done, and Volkswagen factory is one of those things where just a certainty has to come to the trader, to the financial traders, as well as to the business people. So, in a sense, I would say a sustainability of financial politics is the call of the hour. And I think they are on a good way. It is tough to negotiate, I understand that, and I'm following that very closely, but I cannot predict the outcome.
राइट बाबर साहब, इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि लास्ट ईयर वी हैव टेकन वर्स्ट क्लाइमेट कंडीशन. आप समझते हैं कि क्लाइमेट कंडीशन या बैक टू बैक चैलेंजेस पाकिस्तान के साथ जो हुए, पूरी दुनिया ने इसको देखा भी और समझा भी कि हाँ ये पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो कि इट इज़ नॉट द कार्बन प्रोड्यूसिंग कंट्री. इसके बावजूद अभी तक हम संभल नहीं पा रहे, फिर भी मज़ीद जो है वो कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं. अभी तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी सेट नहीं हो पा रही. क्या समझते हैं आप, रीजन में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट होने के बावजूद हम वो बड़ी एफडीआईज़, वो बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रैब नहीं कर पा रहे, कैप्चर नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या हम लूप होल है, ऐसा कौन सा हमारा गुनाह है जो सामने आ रहा है, अगर मैं से इन अदर वर्ड्स बोलूँ तो? देखें, ऑनेस्टली तो ये पूरा सिस्टम की खराबी है, क्योंकि अगर जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, देखें कोई भी आदमी, देखें एक आदमी किसी दुकान से भी कुछ चीज़ परचेज करने जाता है ना, तो उस दुकान की रेपुटेशन चेक करता है. वहाँ तो देखता है उनका झगड़े तो नहीं हो रहा आपस में, दुकानदार को लड़ते नहीं आपस में, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ जाना सेफ है नहीं है. तो आपकी जो ये इंटरनल कंडीशन है ना, ये बहुत डिपेक्ट करती है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, और किससे बात करनी है, कौन लोग हैं, किससे बात करनी है, किस फॉरेन मुल्क ने. तो जब तक आपके पॉलिटिकल कंडीशंस और ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो ये चीज़ें जो ना इतनी आसानी से हल नहीं होंगी. ये तो हम मतलब ये सोचने की बात है, सबको सोचनी चाहिए कि हमें क्या इमेज हमारा डेवलप हो रहा है, हमें क्या करना है इस मुल्क के लिए. अगर हमारी इंटरनल कंडीशन, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स, हमारी जो कहते हैं इन जनरल जो सूरत हाल है मुल्क की अगर ठीक नहीं होगी, तो आप जो है कहते हैं, आप कराची में आप कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट आ जाए कराची में या पाकिस्तान में, कराची में किसी आप आदमी को बोलेंगे जाओ यहाँ से जो है इंडस्ट्रियल एरिया लांडी के चले जाओ, और बाहर से कोई आदमी आया हो तो वो बेचारा जा नहीं सकता. जो कंडीशन हम लोगों ने बनाई हुई है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, क्या चिंची में बैठ के जाएंगे लोग, ना प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ना कोई मेट्रो सिस्टम है. सर अभी तो काफी काम किए जा रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है ताकि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर करता है कि ये दुनिया के दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी के बराबर उसके करीब का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए शहर को, और मतलब कराची के हिसाब से तो, और वो अनफॉर्चुनेटली है नहीं. इसी तरह दूसरी जगह भी हाल है. तो असल जो आप बात कर रही है ना कि ये बायलैटरल रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें, ये जब तक हमारी इंटरनल कंडीशंस और इंटरनल हालात ठीक नहीं होंगे तो मुल्क इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं करेगा. इसकी हमें तवज्जो देनी चाहिए, जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको उस पर तवज्जो देनी चाहिए और मुल्क को. और अगर थोड़ा सा हम कंपेयर करें दुनिया से पाकिस्तान को, अभी की जो डिमांड्स हैं, अभी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बढ़ाना ही हमारे लिए सोल्यूशन है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इज़ दी ओनली सोल्यूशन. यहाँ पे फिर हमारा जो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, ये भी एक बहुत बड़ा यानी कि एक क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि दुनिया में रिसेशन है. जर्मनी हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड रिसेशन, वहाँ रिसेशन है, वर्ल्ड में रिसेशन है, तो उसमें एक्सपोर्ट यूके में इस वक्त एक्सपोर्ट जो है 27% टेक्सटाइल इंपोर्ट कम हुई है. तो अब यानी कि ये दुनिया की सिचुएशन तो ये है इस वक्त कि तो इसमें आपको इतने कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा. एक तरफ आप एग्जांपल दे रहे हैं कि जब अरब कंट्रीज के पास ऑयल ख़त्म हो रहा है तो वो अपना शिफ्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ के ऊपर फोकस, ताकि उनकी आगे अर्निंग्स रहे. तो इसी तरीके से हमें भी देखना चाहिए कि टेक्सटाइल के अलावा व्हाट वी हैव नेक्स्ट. बिल्कुल, आईटी है बहुत बड़ा सेक्टर, मगर उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं. हमें इतनी बड़ी नेशन के लिए हमारे पास तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारा मल्टीपल इंडस्ट्री होनी चाहिए. हम तो इम्पोर्ट नेशन है, हम तो हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, हर केमिकल इंपोर्ट करते हैं, किसी का कोई प्लांट पाकिस्तान में नहीं है, हर प्लास्टिक का दाना तक इंपोर्ट होता है. तो क्या चीज़ मतलब आप अगर हम सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होंगे तो हम किस तरह से जो है रिप्लेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में कैसे. जी, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छा मौका है. यहाँ मिस्टर एनडीओ इज़ हेयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वे हाउ वी कैन बी बेनिफिशियल फॉर जर्मनी एंड हाउ वी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम जर्मनी. दैट वी हैव to learn and listen, and we have to work on it. Okay, Andres, give him answer. I think you have the capability of improving the economy rapidly. Let us look into these export zones. The Karachi export support zone. I think there are already ideas how to that the export zone could actually go to the producer.
before it was just sitting there and waiting for the producers to come. So a mobility is a very important, is Yeah, a very that's important right. point. Mhm. And that is just one example. So it is not that Pakistan is having the means to get out of this. It is a very resilient society, and with a lot of analytics at hand, just grab the analytics and go and walk. Yeah, And the world is that ours. walking, once they are walking, we are there to And assist you. we are very cheap in the whole region. Our markets are very attractive. I have already asked the question from Babar Saab. Do you think about what kind of loophole we are facing actually, because we have a lot of potential here, we have human capital, we are very resilient nation. What kind of loopholes we are facing right now? Do you think that it has to be fixed? As a diplomat, I would not like to to get into this, because I Yeah. I think the loopholes are known, and Just we have to fix the bugs. Right. Well, thank you so much. We are running out of time, and it's very nice to meet you here in the program. Thank you so much, बाबर साहब ने ज्वाइन किया प्रोग्राम में. आज के दिन हमने डिस्कशन की पाकिस्तान जर्मनी बायलैटरल रिलेशन के हवाले से, साथ साथ उस ट्रेजिक हादसा जो कि पेश आया ग्रीस के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस किया. हमारे कंडोलेंसेज उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो इससे मुतासर हुए हैं. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.